Hello बच्चों, let's read this question. When a solid is heated, its length changes according to the relation L equals to L naught times 1 plus alpha delta T, where L is the final length, L naught is the initial length, delta T is the change in temperature, and alpha is the coefficient of linear expansion. The change in the area of a solid upon heating is called superficial expansion. The area changes according to the relation A equals to A naught 1 plus beta delta T, where A is the final area, A naught is the initial area, and beta is the coefficient of areal expansion. So students, इस पैराग्राफ में हमें बस ये समझाया गया है that जब हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो उसकी लेंथ में कुछ चेंजेस आते हैं जिसे रिलेशन L इक्वल्स टू एल नॉट टाइम्स 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं. सेम फॉर द एरिया, न्यू एरिया को हम लिख सकते हैं A इक्वल्स टू ए नॉट टाइम्स 1 प्लस बीटा डेल्टा टी. नाउ हमारा मेन क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है that the coefficients of linear expansion of brass and steel are alpha 1 and alpha 2 if we take a brass rod of length L1 and a steel rod of length L2 at 0 degrees Celsius. Their difference in length remains the same at any temperature if. So students, इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है that for brass इसकी लेंथ हमें L1 दी गई है and coefficient of linear expansion is alpha 1, and for steel its length is L2 and coefficient of linear expansion is alpha 2. इस क्वेश्चन में हमें एक और चीज दी गई है that change in length remains same. So in order to solve this question, please note the key concept of this question, which says that when a solid is heated, its length changes and its new length is given by L equals to L naught times 1 plus alpha delta T. So students, इस क्वेश्चन में हमें दिया गया था that change in length at any temperature T equals to T, this must be equal to change in length at temperature T equals to, let's say, 0 degree Celsius. So students, at temperature T equals to T, हम लोग ब्रास की लेंथ को लिख सकते हैं L2 dash minus L1 dash equals to T. Let's say the length of brass becomes L1 dash and length of steel becomes L2 dash. So their difference at temperature T equals to T must be equals to L1 minus L2. L1 dash को हम लिख सकते हैं L1 times 1 plus alpha 1 delta T minus L2 को हम लिख सकते हैं L2 dash को लिख सकते हैं L2 times 1 plus alpha 2 delta T. This must be equals to L1 minus L2. On rearranging the term, this will become L1 plus L1 alpha 1 delta T minus alpha L2 minus L2 alpha 2 delta 2. This must becomes L1 minus L2. यहाँ से L1 की वैल्यू कैंसल्ड आउट एंड माइनस L2 इज कैंसल्ड आउट. सो स्टूडेंट्स, यहाँ से हम लिख सकते हैं L1 अल्फा 1 डेल्टा टी माइनस L2 अल्फा 2 डेल्टा टी इक्वल्स टू 0. सो L1 अल्फा 1 डेल्टा टी मस्ट इक्वल्स टू L2 अल्फा to delta t. So delta t cancelled out और हमारे पास ये सिचुएशन बच गई that L1 alpha 1 equals to L2 alpha 2, and this corresponds to option D of this question. I hope आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया स्टूडेंट्स. थैंक यू.